Hi guys, welcome back to the channel after the weekend. Hope you had a great weekend. So last week we have completed with systemic lupus erythematosus SLE, and almost we are in the end of the topic immune based diseases or immune based syndrome. तो ये ख़त्म होने वाला ऑलमोस्ट ये टॉपिक. एंड इफ़ यू वांट notes on other topic also, give me suggestion in the comment box. And we'll be starting a new disease or syndrome under immune based diseases. Okay, let's start. Okay, one more thing I want to update that ki I am dealing only with the thing which are important as a dentist or as an oral and maxillofacial surgeon. बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर भी, बट आई एम trying to deal with things which are very important as our perspective. Okay, so let's start. Now the topic is Kawasaki disease. It is not a disease, I'll tell, it's a syndrome. Okay, it is also known as mucocutaneous lymph node syndrome. It fits the very definition of a syndrome, that's a complex of clinical signs and symptoms. तो what is syndrome? किसी भी disease को हम लोग syndrome कब बोलते हैं? जब उसके पास a complex of clinical signs और symptoms हो, तो we will call it a syndrome. तो Kawasaki disease is also a syndrome. In this syndrome, mucocutaneous lesion and cervical lymphadenopathy are two central clinical findings. तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बोला जाए क्लिनिकल फाइंडिंग इस डिज़ीज़ में है म्यूकोक्यूटेनियस लीजन एंड सर्वाइकल लिम्फोडेनोपैथी, एंड बोथ ऑफ दीज grab attention for an oral and maxillofacial surgeons. So each is due to an autoimmune attack on medium to large arteries. तो इसमें autoimmune attack किस पे होता है? आर्टरीज पे. ओके, नाउ although the syndrome suggests a bacterial etiology, its mechanism is thought to be related to a subtle staphylococcal infection. Okay, तो बैक्टीरियल होता है etiology. कोई ऐसा बहुत ठोस प्रूव नहीं है, बट इट इज़ बिलीव दैट हाँ बैक्टीरिया इटियोलॉजी होता है एंड सटल स्टैफिलोकोकल इन्फेक्शन और कोलोनाइजेशन, या तो इन्फेक्शन या उसका कोलोनाइजेशन, विच प्रोड्यूसेस एन एक्सोटॉक्सिन विच इन टर्न एक्ट एज अ पोटेंट एंटीजन. तो जो ये स्टैफिलोकोकस एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं वो एंटीजन की तरह एक्ट करता है. द टॉक्सिन एंटीजन सब्सिक्वेंटली स्टिमुलेट्स अ प्रोफाउंड टी सेल रिस्पॉन्स that produces the observed signs and symptoms of the syndrome. Okay, now coming to clinical presentation and pathogenesis. Children younger than 10 years and of Asian heritage. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यंगर देन 10 ईयर्स और एशियन हेरिटेज में ही दिखेगा ये, लेकिन मोस्टली ये इसमें ही दिखते हैं. फीवर इज़ द मोस्ट कॉमन फाइंडिंग्स combined with a variable mucous membrane presentation of inflamed tongue, जिसको हम लोग स्ट्रॉबेरी टंग भी बोलते हैं, pharyngitis, cracked and fissured lips, and bilateral non-suppurative conjunctivitis. Non-suppurative is layman term में non pus forming, जिसमें पस नहीं बनता है. Okay, now the cervical lymphadenopathy mildly tender with multiple palpable lymph nodes about 1.5 centimeter. तो palpable lymph nodes होते हैं और mildly tender होते हैं. These findings are coupled with extremity signs consisting of edema, erythema, and or a desquamation of skin and rarely oral mucosa. The most serious complication of Kawasaki syndrome is coronary arteritis. 25% untreated केस में ये दिखता है. This has caused coronary artery aneurysm and even myocardial infarction in children, making it one of the most common cause of acquired pediatric heart disease in US. Okay,
So that's all for today's. We'll be continuing this in the next class. Till then, like, share, subscribe and comment. Bye.